Welcome to my channel again. We have consumed so much time in the consignment account. Now it will be last illustration to prove everything how consignment account is to be prepared. And in this case, illustration number 7, we have started with the IP making. There are a lot of steps. We have to make many steps: IP making, invoice price making, and then we have to calculate abnormal loss in go down or in transit. In transit we have made some illustration. Now I have come with the abnormal loss in go down. We have to know how this is to be calculated, then closing stock IP, then their loading. So consignment account includes various points. So therefore हमने इसमें बहुत ज़्यादा समय लगाया क्योंकि हमें कितनी इलस्ट्रेशन नंबर 7 हमें प्रिपेयर करनी पड़ी ताकि हम इसको कम्पैक्ट बना सकें और सारे प्रॉब्लम को यहाँ पे हम सॉल्व कर सकें. तो इलस्ट्रेशन नंबर 7 हैज़ बीन मेंट फॉर completing of the total question with illustration, how IP is prepared, how loading is done, how stock reserve is calculated, how closing stock is calculated, and how our abnormal loss in go down is to be calculated. So in this case, last illustration of invoice price or with consignment account, A of Agra consigned 600 cycles to B of Baroda. Here A is our consigner as we know, and B is our consignee, and A is consigning 600 cycles to B of Baroda costing rupees 450 each at 25% profit on IP. Now we have to decide IP first. So therefore I have made some note, working note. Here calculation of IP per bicycle. It is given CP rupees 450 and he is making profit 25% profit on IP. If the question is on CP, then we have to decide the IP first, because our consigner will be always quoting goods on the basis of IP to the consignee to the B. Here CP is 450. Now it is given 25% profit on IP. I have earlier told यहाँ पे हमारे पास IP पे प्रॉफिट गिवन है, लेकिन जो मेन अमाउंट है वो हमें गिवन है 450 कॉस्टिंग. यहाँ पे CP है और यहाँ पे जो परसेंटेज वो गिवन है IP. इसका मतलब ये होगा कि मुझे IP की परसेंटेज को पहले CP पे कन्वर्ट करना होगा. We have to make parallel CP, then we can prepare the IP. We know CP plus loading is equal to IP. Here 450 is CP. Now it is given 1/4 on IP. It means it becomes 1/3 on CP. Here I have written add 1/4 on IP or 1/3 on CP. Loading will be 150. 1/3 of 450, that will be 150. When it is added, it means our IP becomes 600 rupees per bicycle, per cycle. It means our total consignment sent becomes 600 cycles multiplied by IP 600, that will become rupees 3,60,000. So our question will start: two goods sent on consignment IP, that will become 3,60,000. First of all, we have calculated IP. Now it is clear कि 150 rupees is loading. It is excess charged by A from B, shown by A from B. It means 150 excess amount shall be cancelled on the credit side, and it is known as loading in consignment. हमने कहा था कंसाइनमेंट अकाउंट हमेशा सीपी पे ही बनाया जाता है. एक बार पहले आईपी को लगा दिया जाता है, फिर एक्सेस प्राइस को रिवर्स साइड में कैंसिल कर दिया जाता है. अल्टीमेटली जो ए है, पर्सन कंसाइनर है, वो सीपी पे ही बना रहा है, लेकिन कंसाइनी की नज़रों में पहले आईपी लगा देता है, बाद में लोडिंग को कैंसिल कर देता है, ताकि उसको ये पता ना लगे कि हमारा रियल प्राइस क्या है. तो उसने उसका प्राइस ये शो किया 3,60,000, लेकिन जब उसने अपना अकाउंट बनाया कंसाइनमेंट बिजनेस का अकाउंट बनाया तो 90,000 को कैंसिल कर दिया. अल्टीमेटली उसका वही प्राइस आएगा जिसको हम कहते हैं 2,70,000. ये उसका प्राइस बनेगा और असली उसका वही होगा जो उसने अपनी सीपी पे लगाया है. इसके बाद हमारे पास आगे चल रहा है, अब कहते हैं कंसाइनर ने पे किए 10,000
because consigner has to load the goods and he has to send to Baroda for consigning. It means second entry will be to cash in expenses 10,000, and these are all direct, as we have many times said, these are all direct. And similarly, consignee received the consignment in Baroda and he incurred 5,500 as unloading and 4,500 as storage. Now there are direct and indirect expenditure and total becomes 10,000. 5,500 plus 4,500, 10,000. This A has to remit to B. A has to remit to B the total expenditure, that will become 10,000. Here we are putting on the debit side. Now 2/3. B sold 2/3 of the consignment at the rate of 700 per bicycle. अब B ने 2/3 भाग सामान का उसने 700 रुपए पर साइकिल के हिसाब से बेचा। अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें, टोटल सेंट, टोटल भेजी गई साइकिलें थी 600, अब इसका 2/3 अगर हम कैलकुलेट करते हैं, ये साइकिल का आता है 400 साइकिल उन्होंने बेची है। इसका मतलब यहाँ पे हमारी एंट्री बनती है बाय बीज अकाउंट, पोस्टिंग बनेगी 400 into 700, that will be sale price and total amount shall become 2,80,000. Now B is entitled commission also. Now 2,80,000 of 5%, that will be commission including del creditor commission. So B's commission will be 2,80,000 at the rate of 5%, that amounts will become 14,000. ये भी ए ने बी को कमीशन देना जितना उनका पहले एग्रीमेंट हो चुका है, बट ये कमीशन में डेल क्रेडिटर कमीशन मिला हुआ है। इट मींस वी हैव टू नो द इंक्लूडिंग डेल क्रेडिटर कमीशन। नाउ 2/3 को हमने बेच दिया, इसका अमाउंट बनता है 2,80,000। नाउ 1/2 ऑफ द रिमेनिंग, इट मींस 2/3 के बाद अगर हम 1 में से 2/3 को माइनस करें, अब रहता है 1/3 ऑफ द कंसाइनमेंट। 1/3 ऑफ 600 साइकिल का बनेगा 200 साइकिल हमारे पास बचती हैं। अब कहते हैं रिमेनिंग, उसमें रिमेनिंग जो हाफ है वो हमारा एबनॉर्मल लॉस या लॉस बाय फायर हो जाता है इन गोडाउन। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट abnormal loss in godown, and this is always on CP. Abnormal loss should be always on CP. We have to calculate. Now it is total price of the goods which has been lost, 100 cycle multiplied by 450. Now in this case हमें यहाँ पे CP ही लेना है, क्योंकि CP इसका है 450, ओरिजिनल CP 450 है। हमने 100 साइकिल लॉस को मल्टीप्लाई किया और टोटल इसका अमाउंट आता है 45,000। जैसा कि हमें पता है, अगर 100 साइकिल का टोटल बेस देखा जाए, टोटल साइकिल थी हमारे पास 600, हमने 100 का प्रपोर्शन करना है डायरेक्ट एक्सपेंडिचर ऑफ कंसाइनर एंड कंसाइनी। जब भी हमारे गोडाउन में लॉस होता है, बोथ एक्सपेंडिचर्स आर टू बी एडेड, both parties direct expenditure proportionate, that are to be added. It means now proportionate direct expenditure of consignor will be 1/6 of 10,000, and this amount shall become 1,667, that will be consignor. Similarly, consignees direct are unloading, only 5,500 is direct. हमने कहा था up to go down consignee के direct होते हैं, उसके बाद के सारे हम उसको indirect लेते हैं, और indirect हमारा proportion नहीं होगा। There shall be no proportion of indirect in closing stock as well as abnormal loss in go down. Only direct expenditure proportionate will be treated. Now this case, now proportionate direct expenditure of consignee shall become 5,500 divided by 6, as only 100 is left for our closing stock as well as our abnormal loss. It means 917 treatment shall be added. So now total price will become 47,584. It shall be treated on the basis of CP. Now abnormal loss CP will become 47,584. It is always on CP. ये हमेशा CP पे ही रहता है। अब रह गया हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग के लिए मुझे पहले इसको IP में बनाना है, देन वी हैव टू मेक अप द लोडिंग, उसके बाद हम लोडिंग करेंगे।
अब 100 cycles at the rate of 600 because we have prepared IP. हमने IP बनाया हुआ है जो वैसे CP है 450 लेकिन IP हमें शो करनी है 600 तो closing stock is always on IP. It means 100 cycle at the rate of 600 main amount shall become 60,000. Now same expenditure 100 cycles are closing stock in our illustration, 100 cycles are abnormal loss in our illustration, same articles are there. It means I have to add 1/6 of direct expenditure of consignor and consignors all expenditures are direct. कंसाइनर के सारे एक्सपेंडिचर डायरेक्ट होते हैं इसका मतलब वही करेंगे 10,000 डिवाइडेड बाय 6 क्योंकि 100 ही साइकिल है ये बनेगा 1667 that will be added in the closing stock main amount. Then proportionate direct expenses of consigning that will be only 5500 जिसको हम कहते हैं unloading shall be only considered and it will be 5500 divided by 6 that will be 917 and our total closing stock will become 62584 on the basis of IP. Then by closing stock IP will become 62,584. But this IP has to be cancelled as loading. Whenever we are charging IP हमें इसकी लोडिंग भी देनी पड़ती है बिकॉज हम इसको रियल सीपी पे दिखाना चाहते हैं क्योंकि वी वांट टू हैव ट्रू प्रॉफिट. कंसाइनर चाहता है कि मुझे ट्रू प्रॉफिट मिले मुझे आर्टिफिशियल प्रॉफिट नहीं चाहिए इसलिए पहले वो आईपी पे चार्ज करता है फिर उसकी लोडिंग दे देता है. सिमिलरली अब इन्होंने क्लोजिंग स्टॉक पहले आईपी पे चार्ज की अब इनकी लोडिंग होगी और लोडिंग हमें करनी है ओनली ऑफ मेन अमाउंट. हम मेन अमाउंट की लोडिंग करते हैं. लोडिंग में हम कभी सीपी को कैलकुलेट नहीं करते. इट मींस मेन अमाउंट ही हमें एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट नहीं करना ओनली ऑफ आईपी प्राइस 60,000. It means 150 has been more charged here. So 150 multiplied by 100 that will be stock reserve and stock reserve shall be 15,000. And that will become 15,000. It means we have done everything. Closing stock we have calculated, abnormal loss at CP we have calculated, loading IP everything we have done, sale commission everything. But last item, be informed as 5,000 as bad debt. अब बी ने इन्फॉर्म किया कि बड़ौदा में 5,000 रुपये हमारा एग्जाम्पल है कि वो बैड डेट हो गए हमारे डेटर ने पे नहीं किया लेकिन दैट बॉदरेशन विल नॉट बी ऑफ ए. ये ए के लिए परेशानी नहीं होगी बिकॉज ही हैज पेड इंक्लूडिंग डेल क्रेडिट कमीशन क्योंकि इसने डेल क्रेडिट कमीशन दे दिया है इसका मतलब यहाँ पे इसका कोई भी डेबिट नहीं आएगा. दैट बॉदरेशन विल बी ऑफ बी ओनली. बी ही शो करेगा लेकिन ए के लिए कोई इसका एक्सपेंडिचर नहीं माना जाएगा और यहाँ पे हमने इसको डेबिट भी नहीं करना. अगर उसने डेल क्रेडिट कमीशन ना दिया होता तब हम इस एक्सपेंडिचर लॉस को हम डेबिट में दिखाते हैं टू बैड डेट्स 5,000. अब डेल क्रेडिट वो दे चुका है. नो लॉस फॉर द कंसाइनर फॉर द ए. Now this amount profit shall become 71168. That will be our result. Credit side exceed debits that will be profit. Thank you very much. It will be eliminating total problem of the consignment.